Yes. Okay. गुड मॉर्निंग अमेरिका, गुड इवनिंग इंडिया। आज का ये हमारी कोविड से रिलेटेड 4 शोज़ की सीरीज़ का ये आखिरी शो है आज। और आज हमारे साथ में वी हैव द ऑनर ऑफ हैविंग अ फ्यू फिजिशियंस फ्रॉम इंडिया एंड यूएसए। आज हमारी सबसे पहली हमारी जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर वंदना गुप्ता। She is a senior medical officer at Medical Health Services, Government of Rajasthan, and she is also an image consultant. She has received many awards during her career by the Government of India for running a very efficient clinic in Jaipur. She has been actively managing COVID patients as an outpatient and a wonderful physician. आपका बहुत बहुत स्वागत है वंदना, डॉक्टर वंदना। Thank you, Dr. Sangeeta. डॉक्टर वंदना, लोगों ये कोविड से रिलेटेड टुडे इज़ द लास्ट शो। हमने बहुत कोविड के बारे में बात की है। इट इज़ ऑफ कोर्स अ ग्रोइंग प्रॉब्लम, दो गेटिंग बेटर नाउ, वी आर रिकवरिंग, लेकिन अभी भी ये समस्या जो है वो अभी है। और हमें ज़रूरत है कि अभी भी इसको उसी तरह से लिया जाए जैसे कि ये फ्रेश इन्फेक्शन है। Absolutely. 176 million people have been affected, and there have been about 3.8 million deaths all over the world. और इंडिया में देखा जाए तो करीब 3 करोड़ टोटल people have been affected. So, और ये lately we have been seeing lesser cases now in India, Absolutely. Yes, and yes, you're right. that is from effective prevention. डॉक्टर वंदना, आप प्रिवेंटिव फील्ड में ज़्यादा विश्वास करती हैं, बिकॉज़ देयर इज़ अ सेइंग दैट एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन अ पाउंड ऑफ क्योर। तो Absolutely. बीमारी को अगर पहले से ही हम हल्का कर दें, तो वो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ये प्रिवेंशन जो है कोविड का, कैसे किया जाए और कब, कहाँ और कैसे? आई मीन पीपल नीड टू नो कि अभी जैसे वैक्सीन भी आ गया, कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। हाउ हाउ डू वी प्रिवेंट इट सो इट डज़ नॉट गेट बैड अगेन? Yeah, you're right, Dr. Sangeeta. Actually, COVID has created a havoc throughout the world, entire globe, you know. And the interesting and fortunate thing is that this dreadful disease can be prevented by just very simple measures. बहुत ही simple measures by practicing SMS and by avoiding 3 C's. ओके। SMS is social distancing, mask, M is mask, and S is sanitization. And by avoiding 3 C's is avoiding close spaces, हुँ, close proximity, and close contact. So by just simple three these simple measures, you can prevent this disease. Isn't it interesting? But unfortunately, people are not following that, and that is the reason that this virus, and the most dangerous part of this virus is that it spreads so wildly, just like a fire. So you have to follow these protocols. And if I speak of the nature of the virus, we can see that it is a air rider. Coronavirus is air rider. सो व्हेन यू स्नीज और कफ, जब आप खांसते हो और कफ करते हो, तो मे बी यू आर थ्रोइंग दिस वायरस अ लिटिल बिट फार. लेकिन इवन व्हेन यू आर टॉकिंग, then also you are releasing this virus from your secretion, from your हुँ, saliva. So if you are keeping a distance, that means you are at a lesser risk. Or if you are wearing a mask, in spite of you talking, you are again at a lesser risk. Similarly, and now because India, we are having summers in India, so it is said that though इसका nature we haven't yet, unfortunately, हमने इसका nature अभी तक नहीं समझा. Whether it is a cold virus, whether it is a hot heat preferring virus, or whether it is whatever it is, but thing is, see, we are using
anything which causes ventilation, that means the flow of the air. So that is why we say avoid closed spaces and close contact. So when there is uh, restriction of the airflow, then this virus can be inhabited. वहाँ पर it can stay there. So now when summers are there, people are using coolers and ACs and fans and all. So, talking about ACs, I should say that this virus is pretty much less active at the temperature of 25 to 30 degree. So अच्छा, when you are using an air conditioner, so try to keep your temperature of the air conditioner between 25 degree to 30 degree, in case when the air is humid, little humid. But if in case when the air is dry, so you can keep the temperature up to 30 degrees centigrade, and that is where the virus is very less active. ओके, Plus, keeping door or window slightly open will increase the airflow and thus will create a ventilated हुँ, airflow. Similarly, when you are using coolers, so coolers में you have to keep your windows and doors and everything open. Thing is कि आपका ventilation बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हम जो air में जो हुँ, virus है that is circulated. That is why we recommend closed open spaces. So when you are ओके, in open हुँ, spaces, yeah. So in that case, the virus is equally distributed and you are at less risk. हुँ, Similarly, when I talk about close proximity, so it is studied that more than 15 minutes of contact with a person increases the risk of infection. So whenever if there is a less contact with a person, less time duration, less, so you are at a lesser risk. So that is why we say close proximity is to be avoided, ओके, not more than 15 minutes. अच्छा। So और वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए और टेम्परेचर yes, भी बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी अच्छा, चाहिए। दूसरी बात ह्यूमिडिटी इज अ हुँ, गुड फैक्टर बिकॉज दिस वायरस इज below in some humid area it is very dangerous, and in above certain humidity it's again risky. So it's recommended that the humidity of uh, uh, atmosphere should be around 40 to 70 degree. Above 70 degree coronavirus is not active at all, but above 80 degree or 70 degree humidity will pose another other difficulties like fungal infections. And हुँ, so ideally the humidity of atmosphere surrounding should be around 40 to 70 degrees, so you have to monitor the humidity also. And the most important prevention is stay at home, no unnecessary contacts, and stay positive, stay दैट इज़ अ hopeful, वेरी गुड थिंग। स्टे stay होपफुल। hopeful बिल्कुल, बिल्कुल। without any fear. So this is an calamity, this is a disaster which will soon pass off. सूल You पास have to दैट stay दैट इज़ positive, and यस। scientists and doctors we are working day and night. हम हैं ना. हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है और ये टेम्परेचर के लिए स्पेशली अभी इंडिया में जहाँ पर अभी एक्टिव केसेस बहुत नज़र आ रहे हैं, तो उसमें ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है अबाउट द टेम्परेचर्स कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी ठीक नहीं है और Yes, बहुत ज़्यादा ठंडक भी ठीक नहीं है। तो एक आइडियल टेम्परेचर पर रहना चाहिए और एयर सर्कुलेशन अगर घर में कूलर भी चला रहे हैं, तो खिड़की-दरवाज़े थोड़े-से खोल दें ताकि yeah. सर्कुलेशन बना रहे एयर सर्कुलेशन बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। Similarly, workplace में हुँ, ACs, when we use ACs तो उनमें डायरेक्ट उनमें फिल्टर्स होते हैं जो कि एयर सर्कुलेशन बढ़ाते हैं. तो वी हैव टू सी कि हम जो भी ACs या कुछ काम कर रहे हैं दे शुड हैव फिल्टर्स जो कि एयर को. हुँ, yes, that is true. Ritu ji, thank you so much for your comment that Dr. Vanna is very comforting. Absolutely, she's very soft spoken. Um, Thank you. uh, डॉक्टर वन्ना अभी वैक्सीन भी आए हैं तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन गोइंग अराउंड अबाउट द वैक्सीन तो अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो कौन से वैक्सीन्स अवेलेबल हैं व्हिच वन इज़ बेटर दैट्स ऑलवेज़ अ क्वेश्चन दैट पीपल आस्क कौन-सा बेटर है और कब लगवाना चाहिए और किसको कौन-सा वैक्सीन ठीक रहता है? Yeah, as for now, India has two types of vaccines.
One is Covaxin, which is our in-house um, manufacturing, and the other is Covishield, which uses the technology of AstraZeneca UK. So as for now, we have only these two brands, but definitely we are coming with Sputnik 5 from Russia, Hmm. and all the formalities have been taken. Hmm. Uh, they are going, and shortly this will be available. Also, we are working on getting vaccines which have been used in other countries like Pfizer's and Moderna, Hmm. etc. Hmm. So shortly ये भी available हो जाएंगी. एंड अभी तक जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड हमारी लग रही है ऑलमोस्ट 15% पॉपुलेशन को हम लगा चुके हैं Very good. एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वली इफेक्टिव बिकॉज ये उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं विच वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग. कोवैक्सीन वर्क्स ऑन पोलियो वायरस पोलियो वैक्सीन प्रिंसिपल एंड कोविशील्ड वर्क्स ऑन MMR vaccine which we have been using since long, and we are vaccinating lakhs of children every year. So both of the vaccines are equally effective. Mhm. So I think there shouldn't be any apprehension consider relating to the use of which vaccine should I take and which shouldn't. So both of the vaccines are equally Yeah, important, and shortly, hopefully, we are getting more since we want uh, matlab, up till July end, we want at least 50 to 70% of population to be vaccinated fully. that's very good. That's a very Yes. exciting news and very positive news क्योंकि we need 70% people immunized for herd immunity. And of course, जो लोग जिनको infection हो चुका है उनमें भी immunity पैदा हो चुकी है. So count that as also A partially good, yeah, vaccinated. it's a Yes, positive, yeah, yes, it's a positive yes. factor. यस Yes, सो this. इन जनरल कोविशील्ड जो है वो थोड़े से उम्र में बड़े लोगों को लगाना चाहिए क्योंकि यंगर पॉपुलेशन में क्लॉटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कोविशील्ड से सो दे नीड कोवैक्सीन रादर देन I कोविशील्ड. This is what and talking about clotting, this the new strain Delta, which has just emerged few months back, which has created a great havoc in our country, and literally has taken a toll on our self esteem also, because India was going very good in controlling the COVID, but this the new strain Delta. This, apart from causing respiratory symptoms, it is causing clotting symptoms also, even in those people who don't have coagulation disease, previous coagulation disease. So this is the thing that we need to take care of, यस and this is what has done. The second wave has done created a great um, has been a very serious one. yes yes it's but we will get it behind us one day. India will recover and very Definitely, very yes. soon. Yes, Yeah. it is recovering. Now we are in a Uh-huh. better position. It is recovering. यस डॉक्टर वंदना एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अबाउट आरटीपीसीआर लोग जब किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो लोगों की क्वेरी होती है कि um, हमें दोबारा आरटीपीसीआर कराने की ज़रूरत है क्या टू फॉलो अप टू सी इफ माय कोविड इज गॉन इज इट रियली नेसेसरी No, no, एंड it is not. Yeah, huh? Yeah. Sorry. नो इट्स इज द टेस्टिंग नेसेसरी और अगर करानी चाहिए तो किन सर्कमस्टेंसेस में करानी पड़ सकती अभी है. present ICMR की guideline, it says once you are diagnosed positive, so after 14 days you need not to get tested again. 10 वैसे तो 10 दिन 9 दिन बाद ही वायरस बॉडी में से निकल जाता है. Hmm. सो इवन इफ यू आर लाइक some people they want to get tested, they want to really उनको विश्वास करना होता है, so they get tested. So even if they are getting जी. positive after 14 days, it could be a dead virus also. Even a dead virus can give you a positive RT-PCR test. So it is not absolutely not necessary to get yourself tested. Once you have been tested COVID positive, you have to stay in quarantine for 14 days, whatever the circumstances is, whether you are home quarantine or in the or hospitalized. There is no need to get tested
again. ओके, ओके। Yeah. अनलेस किसी फैसिलिटी से फैसिलिटी में ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे कि रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हाँ, हैं, तो वहाँ पे टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट हो सकता है। बट इन रिक्वायरमेंट हो जनरल सकता डिज़ीज़ को के प्रोग्रेस को जानने के लिए टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं है। यस, डिजीज के ओके, प्रोग्रेस को जानने के लिए ज़रूरत नहीं है, हाँ बिकॉज जी। देर आर टू फेजेस। जब वायरल लोड होता है और जब इन्फेक्शियस लोड होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हुँ, सो यू डोंट नीड टू गेट टेस्टेड वंस यू आर टेस्टेड। वन्स यू सो आर रिकवर्ड तो और कोई वंस यू आर टेस्टिंग की रिकवर्ड और यू टेस्टिंग आर की टेस्टेड और यू आर इन अ ज़रूरत रिकवरी नहीं एंड है। क्वारंटीन हाँ जी, फेज। यस, यस। अ That's a very good information, Dr. Vanna. We also have Dr. Navneet Saxena and Dr. Puneet Puri joining in also. Let me, if you can both turn your videos on, I can join you to the broadcast. बहुत आपने इंफॉर्मेशन अच्छी बताई है। अभी काफ़ी रिकवरी हो रही है। वी नीड टू कंटिन्यू प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स और कोविड के केसेस कम हो जाने का मतलब ये नहीं कि कोविड खत्म हो गया है। So एब्सोल्युटली। take all the precautions like you have been taking, and it's not gone until it's completely gone. So we need to एब्सोल्युटली। keep our guards. Inviting on screen Dr. Puneet Puri from Richmond, Virginia. Hello, Puneet. Dr. Puneet. Hello, hello, how are you? Welcome to the session. Dr. Thank you. Puneet Puri is a graduate of Savai Mansingh Medical College in Jaipur. After finishing his residency in India, he continued his residency at the University of Massachusetts, and he became a fellow in gastroenterology and then hepatology at VCU. Following his fellowship, he continued working, joined the Division of Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition at VCU Medical Center, and his research include fatty liver disease. डॉक्टर पुनीत पुरी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कुछ कोविड की रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के फील्ड में भी बहुत देखे हैं और फ्रॉम योर स्टैंड पॉइंट how does COVID affect the gastrointestinal system? पेट से रिलेटेड कोविड की क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उसको कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं? पहले तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी आपका और इस पैनल का एंड द एफर्ट्स जो आप लोगों ने पुट किए हैं टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह हम इस बीमारी को साथ मिलके डील करें और हैंडल करें. So from the point of view of GI system, like it is a common presentation, depends on कि हम लोग आउट पेशेंट सेटिंग में देख रहे हैं या इन पेशेंट सेटिंग में देख रहे हैं मरीज को. अगर वर्ल्ड वाइड डेटा देखा जाए तो करीब 10 से 50% लोगों के अंदर पहला प्रेजेंटेशन कैन बी अ जीआई सिम्टम Yes. without respiratory or other symptoms, और समटाइम्स बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं जैसे कि बुखार, खांसी, शरीर का दुखना या कमजोरी महसूस करना, ये डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट होता है और कुछ सटल क्लूज सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर पेशेंट हाई रिस्क एरिया से है, एक्सपोजर रिस्क है, तो कोविड के लक्षण भी सजेस्ट कर सकते हैं जीएस सिम्टम्स. तो दो मुख्य चीजें जो इसमें दिखती हैं उसमें है लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, जिसे कि कई लोग रिकग्नाइज करने लग गए हैं. एंड इसको माना जा रहा है कि करीब 50 से 60% मरीज इस तरह की सिम्टम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और ये साइन ऑफ रिकवरी भी शो करता है इन सम स्टडीज, बट इट्स नॉट लाइक कंसिस्टेंटली प्रूवन. हुँ, अदर कॉमन सिम्टम जो आते हैं प्रीडोमिनेंटली डायरिया करके प्रेजेंट करते हैं मरीज. हुँ, उसके अलावा रिफ्लक्स सिम्टम्स हो सकते हैं उनके, नोजिया और ओकेजनल वॉमिटिंग, एंड कुछ पेशेंट्स जो हैं वो पेट दर्द और ब्लीडिंग इन मैनिफेस्टेशन के साथ भी आते हैं. लिवर साइड में देखा जाए तो like enzymes elevation is also another common finding that can be seen.
एंड सो उस चीज को उस संदर्भ में देखना कि भी उनको कोई अदर रिस्क फैक्टर्स हैं या नहीं, उस हिसाब से इवैल्यूएशन में वर्कअप करना। तो ये कॉमन प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं जीआई सिम्टम्स के। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो कन्वेंशनल सिम्टम्स जो बहुत कॉमनली सीन सिम्टम्स हैं वो हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो जीआई सिम्टम्स काफ़ी लोगों को डायरिया हो जाता है, जैसे हल्का बुखार हुआ, डायरिया हो जाता है, व्हिच दे मे थिंक कि फूड पॉइज़निंग हो गई है, बट इट्स एक्चुअली अंटिल प्रूवन अदरवाइज़। अभी कोविड के टाइम में तो हर चीज़ को हम लोग ऐसे ही ट्रीट करें कि ये कोविड ही होगा। We also have with us Dr. Navneet Saxena from Jaipur. Um, डॉक्टर नवनीत, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर नवनीत सक्सेना इज़ अ नेफ्रोलॉजिस्ट, वो किडनी के डॉक्टर हैं। ही इज़ अ कंसल्टेंट एट किडनी केयर एंड जनरल हॉस्पिटल, Jaipur, in Jaipur. Dr. Navneet Saxena has been working as senior consultant nephrologist and transplant physician since 1994. डॉक्टर नवनीत, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Dr. Anil Jain is also trying to connect. As soon as your device is connected, Dr. Anil, I'll bring you on stage. Um, looks like some technical issues there. So coming back to the GI symptoms, during the illness, what can we do to prevent GI complications and protect our stomach and intestines? So it is a very interesting point. SARS or COVID virus depends on certain receptors which are called ACE receptors, and ACE receptors outside of the pulmonary system are also seen in many GI organs, predominantly stomach and intestine, as well as now it has been also proven that they are present in liver and the bile, the cholangiocytes, which are the bile duct system producing cells. Oh, So that is where, so once if respiratory system is primarily involved, you are fortunate that the GI system may be somewhat spared. But hmm, when it is a mild to moderate illness where the contact is available or the receptors is still not saturated in the respiratory system and the subsequent cytokine storm features are not there, then hmm, it does affect those symptoms or those systems as well. And commonly, the patients who have existing illnesses are more at risk. So okay. predominantly from GI system, the two big conditions are liver disease, like presence of chronic liver disease, worse so Hmm, with alcohol and cirrhosis, hmm, hmm. and the GI side, inflammatory bowel disease. And interestingly, people who are on steroid therapy but not on other therapies, which are the biologics which we use in treatment of controlling Crohn's and ulcerative colitis or IBD broadly, the people on steroid therapy are more predisposed and have higher risks, as well as severity and outcomes are accordingly worse. सो जिनको जो पहले से स्टेरॉइड ले रहे हैं बिकॉज़ ऑफ सम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, दे मे बी एट हाई रिस्क बिकॉज़ उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ऑल्दो Right, स्टेरॉइड द मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट फॉर कोविड, लेकिन अगर आप बहुत टाइम से लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहे हैं तो आपके लिए एक रिस्क हो जाती है। इट मेक्स यू more prone to developing any infection for that reason. Um, right. uh, so तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है ऑडियंस के लिए भी, प्लस जो इस चीज को एजुकेट कर सकते हैं, is about alcohol. There are a lot of misconceptions that alcohol is like harmful to the virus, and virus is not going to get like infective or it will kill the virus. Of course, that okay, kind of alcohol is different. But okay, people, when they're drinking alcohol, largely their outcomes are extremely like worse. More worse. so, yes. So like 3 to 4 times higher risk of death I in see. patients with liver disease. वाओ! तो अल्कोहल जिनको क्रॉनिक अल्कोहल लेने की जिनको आदत है इन एक्सेसिव अमाउंट्स, तो उनको ज़्यादा रिस्क है कोविड से। Exactly, exactly. सो या
That's a very important point. Yeah, alcohol should go on your hands, not in your stomach. That's a great message. I think Dr. Navneet, we welcome back. Can you hear us? I think he's having some technical issues. While he's managing his sound, डॉक्टर पुनीत, the one other हाँ जी। question for you, जो दवाइयाँ ले रहे हैं, now we talked about presentation जो stomach की प्रॉब्लम लेकर लोग आ सकते हैं जिनको कोविड हुआ है और या फिर जिनको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कोई इलनेस है उनको रिस्क ज़्यादा है. हाउ अबाउट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट? ये जितनी दवाइयाँ ले रहे हैं कोविड के लिए उससे पेट पर भी असर पड़ सकता है। तो उसके प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं? So, जैसा आपने जिक्र किया पहले कि steroid is used for treatment also. So, high dose dexamethasone is currently the mainstay in moderately severe to severe disease. And remdesivir जो काफी commonly use हो रही है, ये दो common drugs हैं जिनके की GI पे known side effects हैं. For steroid, many of these people are at risk for bleeding and especially coexisting disorder. And stress ulcer or GI bleed prophylaxis is important. हुँ, So generally, most of the doctors are prescribing the proton pump inhibitors such as कि कोई दवाइयाँ हैं हुँ, esomeprazole या pantoprazole या even H2 blockers. But हाँ। PPI generally are more effective in acute setting. सो Interest लेमन्स टर्म अगर बोलें तो वो पीपीआई एंड एच2 ब्लॉकर इफ यू कैन अच्छा हाँ इलैबोरेट तो फॉर वो आवर एसिड हाँ एसिड सप्रेसिंग मेडिकेशन जो है उनको जनरली साथ साथ में देना चाहिए जिससे कि पेट पे और आंतों के ऊपर उसका प्रोटेक्शन रहे और इफेक्ट ऑफ लाइक जो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है उसको कम किया जा सके और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज है ये कोशिश करनी चाहिए कि इनको किसी भी तरह मुंह से या अगर वो मुंह से नहीं खा सकते तो नली के द्वारा जो ट्यूब लगाते हैं फीडिंग की उस ट्यूब के द्वारा उनको खाना दिया जाए या न्यूट्रिएंट्स दिए जाएं क्योंकि जो जीआई सिस्टम है वो डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट्स के ऊपर और अगर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे जाएंगे तो वो उसको रीजनरेट करेगा और साथ में अच्छे जो माइक्रोबायोम है उसको भी मेंटेन करेगा. That's a very good information. And we have a question coming up from Sangeeta Gupta जी कि विटामिन सप्लीमेंट्स जो प्रिस्क्राइब्ड हैं वो नेगेटिव होने के कोविड नेगेटिव होने के कितने दिन बाद तक लेना चाहिए? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है और फेवर कर रही है उसके अंदर विटामिन सी का एक इम्पोर्टेंट रोल बताते हैं बोथ इन प्रिवेंशन एंड इन ट्रीटमेंट इनफैक्ट हमारे खुद के सेंटर से विटामिन सी की स्टडी का ट्रायल चल रहा है अभी रिजल्ट्स अभी पूरे आए नहीं हैं लेकिन जहां जहां पे विटामिन सी उनको हाई डोज में दिया गया है अदर दवाइयों के साथ तो उनके रिस्पॉन्स एटलीस्ट सेफ्टी एंड हुँ, कॉम्प्लिकेशंस के उसमें अभी प्रिलिमिनरीली बेनिफिट दिखते हैं लेकिन पूरा अभी डेटा आउट नहीं हुआ है हुँ, आफ्टर वो रिकवर हो जाएं तो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज न्यूट्रिशन इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं तो कॉमन विटामिन जनरली विटामिन सी विटामिन डी और बी 12 ये पूरा और मल्टीविटामिन ग्रुप इम्पोर्टेंट है कोई चीज ज्यादा नहीं ली जाए जिंक का काफी अच्छा रोल बताते हैं और कई टाइम तक ये माना गया था कि जिंक के ऊपर डिपेंड करता है ये वायरस अगर आप जिंक डेफिशिएंसी करता है तो ज्यादा रिस्क रहेगा हुँ, जिंक के हुँ, अदर बेनिफिट हैं जीआई सिस्टम के ऊपर जिससे कि रीजनरेट होती है एपिथेलियम मतलब जो डैमेज हो रहा है उसको वापस ग्रो करने में मदद करता है हुँ, और हुँ, इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है ठीक है। ये मेन विटामिन्स इनके हैं जो लेने चाहिए क्रॉनिक डोज के अंदर अभी तक ऐसी कुछ स्टडीज का पता नहीं कि कितना बेनिफिशियल है बट अगर आप खाना नॉर्मल खा पा रहे हैं तो सिर्फ विटामिन डी और विटामिन सी ये थोड़े से आप ले सकते हैं सप्लीमेंट बट हुँ, वी डू नॉट नो कि हुँ, कितनी देर इसका खान पान करना चाहिए
हाँ, तो ये यूजुअली अभी सिंस वी डोंट हैव any evidence based studies at this time कि कोविड के बाद में कितना वी आर जनरली यूजिंग अ गाइडलाइन ऑफ 30 days ऑन एन एवरेज कि 30 days फ्रॉम योर डायग्नोसिस, उसके बाद तक आप 30 डेज तक आप ले लें तो उससे आपको फ़ायदा होता है। और राइट। प्रोफिलैक्सिस के लिए भी, और आपने ज़िंक की बहुत अच्छी बात बताई है कि ज़िंक इज़ वेरी गुड फॉर योर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं कोविड के? दिस क्वेश्चन इज़ फॉर बोथ डॉक्टर पुनीत एंड डॉक्टर वंदना। कोविड हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, यू टर्न नेगेटिव, उसके बाद में जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, जो हमारा पेट है और जो आते हैं हमारी, उनमें लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या देखने को मिल सकते हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं पेशेंट्स? तो ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इसके ऊपर इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास ऐसी अवेलेबल नहीं है कि अगर प्राइमरीली कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है विदाउट उनकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, उसके बाद उनका क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। शॉर्ट टू मिड टर्म इफेक्ट्स वी सी बिकॉज ये पेशेंट्स फॉलोअप में आते हैं, और परसिस्टेंस ऑफ डायरिया इज वन कॉमन थिंग दैट हम लोगों ने देखा है। तो वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस जैसा मैनिफेस्ट करता है अगर आप उसकी वर्कअप करें, एंडोस्कोपी करें, बायोप्सी लें। बट इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया है उसको एक्सक्लूड किया जाए, जैसे सी हुँ, डिफिसिल करके होता है। उसका बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिकॉज आधे से ज़्यादा टाइम इन मरीजों को अगर हॉस्पिटल स्टे हुआ है तो एंटीबायोटिक्स भी मिलते हैं। एंड दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज दिखती है वो परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम्स हो सकता है। तो लिवर एंजाइम्स के दो तरीके से मैकेनिज्म है। अगर अंडरलाइंग लिवर प्रॉब्लम है तो वो अंडरलाइंग लिवर डिजीज को एक्सेसरबेट कर सकता है, जैसे हुँ, कि फैटी लिवर है अल्कोहल या नॉन अल्कोहल की वजह से, या अगर सिरोसिस है तो सिरोसिस में इसके आउटकम 3 to 4 times इंक्रीज रिस्क ऑफ लाइक हुँ, डिकॉम्पनसेशन, जिससे कि डिजीज वर्स हो जाए और आउटकम खराब हो सकता है। हुँ, लेकिन अदर जैसे पेन, abdomen पेन नॉन स्पेसिफिक, ये भी कुछ मरीजों में देखा गया है। इसका मुख्य कारण पता नहीं पड़ पाया कि ये क्या है। some patients have presented with gallstone exacerbation after they have recovered from the COVID infection। इन कुछ पेशेंट्स के रिफ्लक्स सिम्टम्स भी वर्स हो जाते हैं। हुँ। तो इट इज काइंड ऑफ लाइक अ पैराडॉक्स। जो क्रॉनिकली ये एसिड सप्रेसिंग मेडिकेशन लेते हैं उनमें सम डेटा हैव सजेस्टेड कि इंक्रीज रिस्क ऑफ कोविड, और लेकिन अगर उनके सिम्टम्स हैं तो आपको उनको कंट्रोल भी करने के लिए वही दवाइयाँ देनी वही पड़ती हैं। दवाइयाँ देनी पड़ती। दैट इज़ ट्रू, या दैट इज़। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एसिड नहीं रहता स्टमक में तो यू आर एट अ हाई रिस्क, बट व्हेन यू आर बीइंग ट्रीटेड फॉर कोविड आपको वही दवाइयाँ वापस लेनी पड़ेंगी टू सप्रेस द एसिड Yes. to prevent the side effects from COVID. That's a very important point. Dr. Vanna, over to you. Long-term side effect, non-GI related. क्या देखने को मिल सकते हैं और Yeah, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? या लॉन्ग टर्म अभी तो सिंस 1.5 2 साल ही हुए हैं कोविड को आए हुए। सो लॉन्ग टर्म अगर इफ वी टॉक अबाउट हाँ, लॉन्ग टर्म, 1.5 साल it's का ही like पीरियड it's देखें। हाँ, सो अभी तक जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो साइड इफेक्ट या जो लॉन्ग टर्म देखा जा रहा है वो है सीवियर 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 वीकनेस weakness हो। in some of the people who are already who have comorbidity and who are हुँ, a higher risk group like above 60 and with comorbidity factors लाइक जिनको हाइपरटेंशन है या हुँ, जिनको डायबिटीज है whatever, so हुँ, they are experiencing severe weakness, like weakness in the sense that some of the cases which I have seen in OPD, they come with severe leg pain, calf muscles pain. So हुँ, this is what we are experiencing, and on getting them investigated, all the parameters they turn out to be normal, yet these ओके, people, या yet these हुँ, people sometime ये लोग पेशेंट्स हमें बताते हैं कि हुँ, कभी कभी तो सडनली ऐसा हो जाता है कि वी आर नॉट एबल टू वॉक अप टू द टॉयलेट ऑल्सो।
Hmm. So this is what I've been seeing in my OPD daily. Hmm. And as Dr. Puneet has suggested, that chronic diarrhea, off and on diarrhea, like Hmm. people, they are getting off and on sometimes. कुछ दिन रुक जाता है and कुछ दिन sudden diarrhea हो जाता है without any cause. Like if we try to find out the cause, so we are all relating these symptoms to COVID only. Hmm. And दूसरी बात है, अब now what we are experiencing in India is the mucormycosis. Hmm. These cases are getting so much, इतने ज़्यादा cases हो रहे हैं mucormycosis के. Hmm. And initially it was thought कि ये steroid therapy से हो रहे थे during COVID, या it was because of the oxygen uh, use of undistilled water, non-distilled water. Hmm. But now one more factor has come into being. Though zinc is very good for gastrointestinal and all, but zinc is also being found to for the fungus to grow. मतलब fungus के लिए it's been a food. Oh. So after COVID जो long term तो नहीं है, मतलब 6 to 8 weeks के बाद young generation. Hmm. I think some people are not able to hear me. आपका वॉल्यूम लो है. So maybe you Volume. can maybe you can Okay. move closer to your device. Maybe. And we also Yeah. have Dr. Anil Jain is trying to join also. Dr. Anil Jain from Okay. Jaipur. By the He's time trying I to set connect. my volume, you can talk to Navneet, Dr. Navneet, and Dr. Yeah. Anil J. Dr. Navneet is a nephrologist. As I told you before, he's a consultant at Kidney Care and General Hospital, and he has been associated with the transplant clinic also since 1994. Dr. Anil Jain just joined. Dr. Anil Jain, आपका बहुत बहुत स्वागत है. Dr. Anil is the head of the department at Dr. P.K. Sethi Rehabilitation Center at Santok Badurlabji Hospital at Jaipur Foot Center, and he's looking after patients with locomotor disability due to various causes. Dr. Anil, आपका बहुत बहुत स्वागत है. Um, Thank you, Dr. Sangeeta. thank you. Hello, hi everyone. Hello. Hi all. So, Dr. Anil, since you are related to rehabilitation, आपका field है rehabilitation, तो COVID से जो Yes, नुकसान होता है वो काफी वैरायटी में आता है. मतलब टॉप टू mm, बॉटम इट्स लाइक कमजोरी से लेकर लंग डैमेज, हार्ट डैमेज हो सकता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट ऑल्सो, लेकिन लोगों को मानसिक बीमारियां भी हो रही हैं, क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, yes, yes. एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा Hmm. है, मसल एंड जॉइंट पेन, क्रॉनिक फटीग. तो डॉक्टर अनिल, पहला Yes. सवाल आपसे मेरा ये है कि कोविड से रिकवरी में कितना टाइम लग सकता है, और क्या करना चाहिए टू एनहांस द रिकवरी प्रोसेस? See, very good question, Dr. Sangeeta. See, the recovery from COVID takes place according to individual body. You see, you cannot have a definite set of time that everybody will recover in 2 weeks after becoming negative, or 3 weeks or 4 weeks. There is wide variation. Hmm. And to enhance the recovery, there are certain things which happens that you should know what are the comorbidities in your body. Hmm. See, there are certain factors which are involved in recovery, but I think, Dr. Anil, you are hello, breaking. You were talking about comorbidities कि your आपके. what is your age? हाँ. If you have not recovered after 2 3 weeks, Hmm. then there is something wrong with the body. The infection is still persisting there. You must get yourself investigated for certain things, like the most simple and the important investigation is your hemoglobin level. Okay. That is important for oxygen carrying capacity. Okay. And the second important thing is CRP.
Okay. how active the infection is in your body. These two things are very important. And if Okay. you are on steroids because of some comorbidity, or you are taking steroid as a result of COVID infection, then the steroid delays recovery process because it delays elimination of virus from the body. Hmm. These are two, three things which delays recovery, especially in diabetics. The recovery is delayed. If your diabetes is not well controlled, then again COPD. If you have some chronic obstructive pulmonary disease, then Hmm. your recovery is delayed. राइट, दैट इज ट्रू। एक सवाल लोगों का होता है कि पोस्ट कोविड, जैसे कोविड से रिकवरी के बाद में उनमें थोड़ी-सी ताकत आनी शुरू हुई है, तो कितनी एक्सरसाइज़ करनी चाहिए और कब शुरू करनी चाहिए? Yes, see, everybody says that you should do exercises, you should do exercises, but no one is telling how to do it, when to start. See, the important thing in starting exercise is that what was your pre-COVID exercise level. ओके। If the person was completely sedentary and he starts exercising at full speed, then the complications are likely to develop. So the important thing is to evaluate his pre-COVID level. And there are few parameters which you should check before starting exercises, like your hemoglobin level and comorbidities. If your comorbidities are high, then you should start exercising early. आई थिंक डॉक्टर अनिल इज़ हैविंग सम साउंड इश्यू। वो कह रहे थे Shortness कि of breath at rest, you are having palpitations or chest, डॉक्टर आई एम सॉरी डॉक्टर or you अनिल। are having swelling in your legs, you are developing dizziness or cold clammy skin or exercise fatigue. हुँ, So these are important things. And before starting exercises, you should get your serum electrolytes done, because the level of potassium and sodium should be normal. And it is better if you can get serum calcium, phosphorus, and magnesium level also, vitamin D level. And the important thing is, very important thing, if you have some musculoskeletal problem, then CPK level must be determined. These are ओके। the few things you should get yourself checked before you हुँ, start exercising. And you should start from very simple exercises, and do it in pieces, not for the entire body. You should do it at once, because you are likely to get fatigued. So हुँ, do for the upper body first, then do for the lower body. ओके। Do very little number of repetitions. हुँ, Then you start walking for short distance, not for a long distance right from the beginning. So these are the few things you should take care of before exercise. ओके। दैट दोज़ आर वेरी गुड पॉइंट्स डॉक्टर अनिल। um, फिजियोथेरेपी का काफ़ी रोल होता है कोविड रिकवरी में, क्योंकि अगर आप Yes. आईसीयू में 3 दिन तक रहते हैं, तो बॉडी का जो Mhm. मसल मास है वो 10% कम हो जाता है ऑलरेडी, बिकॉज़ Yes, definitely. तो उसको बिल्ड अप करने के लिए आपको काफ़ी और Yes, एक्सरसाइज़, लेकिन एक्सरसाइज़ ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि yes, it अति is harmful. अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो इवन एक्सरसाइज़ इन अ, एक्सेस इज़ ऑल्सो वेरी बैड। तो जितना आपकी बॉडी टॉलरेट करे उतना आप एक्सरसाइज़ करिए, और Yes, एरोबिक एक्सरसाइज़ थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए तुरंत कोविड yes, right. Right in the beginning, you should avoid it, and you should start slowly. स्लोली। हाँ जी, हाँ जी। Yes, because the number of patients dying suddenly, sudden death is become common after COVID or in the COVID sufferers. And the one cause attributed to is that they start exercising हुँ, very profusely. राइट। सो बिकॉज़ So that is the one. मायोकार्डाइटिस और हार्ट पे भी असर पड़ सकता है कोविड से, इवन Yes, it can lead to myocarditis also. राइट, If you are already suffering from some ischemic heart disease or valvular heart disease, you are likely to get bad effects राइट, with और too उसके much बाद में exercise.
उसके बाद में बगैर जाने अगर आपने एक्सरसाइज और कर ली तो वो हार्ट पे जोर ज़्यादा पड़ेगा एंड Yes. उसकी भी दिक्कत हो सकती है. I'll try to See, Dr. yes. Navneet. Yes, go ahead, Dr. Anil. Yes, what I was saying that this post-COVID rehabilitation has become everybody's cup of tea. So every lay person when walking on the street had started advising exercise. All doctors have started advising exercise, but it is always better to stay in touch with some expert, PMR expert, Hmm. or your physician, and do it properly. Hmm. If PMR expert is not available, then stay in touch with your physician and Yes. start slowly. Hmm. It That is is always better to start slowly. better to start slowly. That is true. Yeah. I'll try to add Dr. Navneet back on. He's having some connectivity issue. Dr. Navneet, can you hear me? एक सवाल आ रहा है, how long Yeah, antibiotics? now I'm audible. Yes, आपकी आवाज अब आ रही है. Dr. Navneet, can you hear us? Ari. So that from the one don't have any information. I will share regarding to the team because being a nephrologist, I think two आपकी things I want to right check. connectivity issue है Dr. Navneet. Dr. Navneet, I think आपका काफी साउंड में echo बहुत आ रहा है. I'll mute your stuff for. I think there is some connectivity issue there. Dr. Vandana, coming back to you, um, ये जो डेल्टा स्ट्रेन अभी जो नया आ रहा है, इसकी इन्फेक्टिविटी भी ज़्यादा है और उसकी पोस्ट कोविड रिकवरी भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है. तो उसको कैसे आप आई नो कि स्ट्रेन को हर मरीज में तो हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वी कैन प्रिज्यूम कि ये वाला स्ट्रेन आया है. उसके बाद में आप वैक्सीनेशन जो है आफ्टर रिकवरी, व्हेन डू यू रिकमेंड दैट? See, after recovery, we usually say once you are infected with COVID, vaccination should be given ideally after 3 months, that is 90 days. Okay. You know, since this Delta virus, it is a very dangerous strain because it has been jointly mutated the previous alpha and beta strains. So this has created more hospitalization, it has created more severity, and one of the bad thing about is that it evades the immune system, your immune system. Mhm. It just it can evade your immune system, so immunity as it is goes down. And other bad point is that it sometimes it you cannot diagnose it with the normal investigative procedures. Hmm. So after getting infected, it it is like this the guideline which shows is that 90 days you are recommended that after 90 days you take vaccination, and be sure that you take both the doses, because इसकी जो पहली डोज के साथ जितनी इम्यूनिटी होती है वो इनकम्प्लीट सी होती है, एंड completed सेकेंड डोज के बाद इट गिव्स द सेम इम्यूनिटी एज द प्रीवियस स्ट्रेन्स. Okay. तो ये दोनों डोजेस आपको लेनी बहुत ज़रूरी होती हैं. Hmm. So you should keep in mind that after 90 days you go for your first day dose, and the recommended gap जो अभी हमारा चल रहा है that is again 84 days, so you go for your second Hmm. dose. Hmm. That is very important. So 90 days after the infection, 90 we days can. after, Oh, yes, 90 yeah, days after yeah. your infection, day one of your infection. Hmm. Okay. Yeah. एक सवाल आया है डॉक्टर पुनीत पुरी जी के लिए. डॉक्टर पुनीत सर, पोस्ट कोविड रिकवर्ड पेशेंट विद RT-PCR negative report. He intends to travel outside his state by flight. It's mandatory to have latest RT-PCR report with him, but I think his question is truncated. It's not complete. So yeah, it's about testing RT-PCR. I think it must be in India. India के
reference में होगा, because US में it's not required anymore. So I think like it is following the guidelines of the government and aviation, because even though you are vaccinated or even if you have recently been tested negative, if the aviation or airline industry and the government recommendation is, I think we have to stick to those recommendations and guidance. And like it keeps varying or changing. So that is where we have to follow the protocol, what is being advised. You're right, in USA right now, they are not encouraging any testing prior to boarding domestic flights, Mhm. but they're still mandating like mask and precautions That is despite like vaccination. That is correct. Thank you so much, Dr. Puneet. You're welcome. एक सवाल आया है जनरली, हरीश जी पूछ रहे हैं, how long antibiotics given after discharge, other than after exertion the saturation comes below 85%, requires oxygen concentration, is there any problem in regards to my brother? So इनका, if I'm understanding it right, उनको antibiotics कब तक देनी चाहिए, और what after exercising and exertion the oxygen saturation drops? So Dr. Anil. I think You can, Dr. please. Vanna, you can take it. Yeah, I think he's having some network problem. So my understanding is, well, antibiotics, I mean, for COVID, it's not really a necessary part of the Yes. treatment. You But don't need post discharge mhm, any antibiotics antibiotic, since you have already been given the entire course, yes. unless you are on you have comorbidity or you have further symptoms. So Hmm. because antibiotics are actually a double sworded thing, it can treat also and it can increase your infection also. That is true. So, and if the SpO2s come, as Dr. Anil has already said, that after recovery you have to go on exercises very mildly and very carefully. So if your SpO2 is falling below 85, then really it's a grave situation. So you just watch it and watch for the breathlessness and all. And at a stationary position, you take your SpO2. If it is again at that stationary position also, if it is 85 or below 85, then you need to go to the doctor immediately, Post because as pulmonary post fibrosis COVID, as well. yeah, pulmonary fibrosis Yes, is very possible. common, and it, yes. Okay, Dr. Anil is, I think He's he back can on. also throw Yes. light on that. He's back. Yes. Yeah, Dr. Anil, this is the question which Uh, Harish ji has put up, and I think you can throw light on that. yes. I think he's still having some network issue. Dr. Vanna, continue to respond to that. And Dr. Puneet, if you have any Yeah, input in that regard yeah, also. And yeah, I antibiotics are GI's least favorite right. medication. So I have few comments. Yeah, depend like first of all, it depends what the antibiotic is being used for. Again, if it is truly indicated, then that is supposedly like to be given for the duration that it is prescribed for. They could have secondary bacterial pneumonia, other infection, like from any other organ, UTI or bacteremia. So then it is reasonable to complete the course of antibiotic as it Mhm. is indicated for. If it is just indicated as a prophylaxis, then there are two big risks. One, of course, like antibiotic associated GI complications, and two, the prevalence of like fungal infection can be a bigger factor. Then these Yeah, patients can develop fungal infection. From that the is. standpoint of view of oxygen dropping, I think like there can be multiple reasons and factors, including what has been alluded as like post-pulmonary fibrosis, as well as
One of the things to not ignore is the presence of like microcirculatory defects, including clotting disorders. Okay, And yes, that's important. one of the things to really look for is the D-dimer in such situations, because Hmm. that is like as a fibrin degradation product. Hmm. If there is a shift, like as a clinical norm, you can like still have normal or just above normal, but if it's doubling time is there, and then if it is associated with any of the inflammatory markers, that can be of importance. And these patients should accordingly should be anticoagulated because risk of thromboembolic events are known. So That, maybe that is that's contributing as a factor too. yes, that is true. That is true. Now, सुरेंद्र शर्मा जी एक बहुत ही important mental health related question पूछ रहे हैं. How to take care of mental health post COVID? Is post COVID depression real? Yes, and it's called the situational depression. क्योंकि पोस्ट कोविड डिप्रेशन बिकॉज आप उस बहुत बीमारी से निकल चुके हैं और आपको ये बिकॉज ऑफ द फियर दैट is there. The more you know, the more the scared we get. तो डिप्रेशन सिचुएशनल होता है और ये कुछ महीनों में ठीक हो जाना चाहिए अनलेस अगर आपको फैमिली में डिप्रेशन की बीमारी है या आपको कोई जेनेटिकली डिटरमिन्ड डिप्रेशन डिसऑर्डर है तो वो इस दौरान बढ़ सकता है लेकिन यूजुअली जो कोविड रिलेटेड है इट शुड डिसिपेट जब आपकी हेल्थ पूरी तरह से ठीक हो जाती है यू शुड बी बैक टू नॉर्मल और घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है आप अपनी सोशल लाइफ जो है उसको मेंटेन करके रखिए किताबें पढ़िए अच्छी अच्छी नॉलेज अच्छी चीज़ें पढ़िए टीवी पे अच्छे जो भी पॉजिटिव शोज़ हैं वो देखिए अपनी मेंटल हेल्थ के लिए दोस्त तो हैं आपकी फैमिली है तो उनसे बराबर कांटेक्ट रखिए बिकॉज लोनलीनेस अगेन कैन एग्रीवेट द डिप्रेशन तो और ये डिप्रेशन रियल है लेकिन परमानेंट नहीं है इतना मैं आपको कह सकती हूँ आई होप दैट आंसर्स टू योर क्वेश्चन सुरेंद्र जी सत्येंद्र जी again he has a question if that patient comes back positive again, should he be required to take the test again, even after fully vaccinated traveling within the country? अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो Treatment again. वंदना जी डॉक्टर See, वंदना the ओवर sim- टू यू okay, okay. See, if the patient comes again positive, I am telling you that RT-PCR test is not really 100% sure of your COVID infection. Even a dead virus can give a test positive. So, if a person is asymptomatic and has taken full treatment, previous COVID infection, and is fully vaccinated and is traveling within the country, if the person is asymptomatic, there shouldn't be any need for COVID treatment again, ओके right? And only the symptomatic management can be done, like अगर थोड़ा सा fever है या थोड़ा सा कफ है, क्योंकि मैं again I'm telling you, RT-PCR test is not, it is just 40 to 60% confirmatory. So we need to take other markers also in consideration and to see the exact state of presentation of the patient, उसका क्या presentation है, so this can be handled. राइट सो If it is, so to if it speak is required to take the treatment, TT, I gather it is the treatment or the test. Uh, I have not fully understood आई थिंक the abbreviation of ट्रीटमेंट की TT. बात की कि if they turn Treatment. positive again is treatment necessary and the answer will be no क्योंकि Wonderful. 18 से 20% लोगों में ये कोविड टेस्ट जो है ये पॉजिटिव रह सकता है इवन अप टू Even up. 3 Yes. to 5 months you can Absolutely. Yes. कंटिन्यू टू रिमेन पॉजिटिव लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप उसको ट्रीट करते जाएं एवरी टाइम यू टेस्ट पॉजिटिव दिस इज नॉट अ टेस्ट जो पॉजिटिव होते ही आपको दोबारा ट्रीटमेंट लेना वंस यू हैव रिकवर्ड you don't need to worry about And the one more myth about vaccinated people getting COVID positive. Like people, they often ask कि मैंने तो वैक्सीन लगा ली फिर भी मैं कोविड मुझे कोविड पॉजिटिव क्यों आ रहा है. So let me tell you कि COVID vaccination is for the protection. It is not for the prevention of infection.
You can be infected by the coronavirus even if you are vaccinated, but you will be protected from the development of the disease. So thing is कि अगर आप वैक्सीनेशन के बाद भी पॉजिटिव आ जाते हैं, देन देयर इज नथिंग टू वरी, यू कैन, क्योंकि वैक्सीनेशन आपको कोरोना वायरस तो दे देगा लेकिन वो डिजीज को प्रोग्रेस नहीं होने देगा. वैक्सीनेशन इज प्रोटेक्टिव and you can get infected. severe. Dr. Puneet, you were saying something. Yeah, so like from the panel, if there's any thought about if like number one, I believe practice in US is that they don't repeat the RT-PCR routinely. So that's number one. Is this something that in India, if it is being done, do they like quantify two things? One, the cycle threshold, and does it have any value to add the cycle threshold? And two, any role of measuring the antibody titers? Uh, will that help in guiding that yes, you are exposed and you have immune response? Yes, Dr. Puneet, we are doing this only. We are not repeating the test. The guideline says the test is not required once you have recovered from the test. But even if some people they want to do, so we are doing that cyclic threshold and also the antibody titer. We are already doing that. Thank you. That's a very good explanation, Dr. Vanna. एक और सवाल आ रहा है, what if one is vaccinated 6 weeks after recovery? So yeah, a lot of things have changed over time. पहले था कि CDC यहाँ पे USA में we have been vaccinating people 14 days after the complete recovery from COVID. 14 days from your test positivity. If you're asymptomatic, मतलब आपको कोई और symptoms नहीं आ रहे हैं, we will vaccinate you. India में it used to be 90 Same, days, I think, or same. 6 No, no. weeks, It but was abhi same. 90 3 months. days, Initially, it was Yes, same 14 90. days after 14 days after. recovery. But So, now the guidelines have changed, and now it's hmm, 90 days after 90 recovery. days. और अगर लगवा लिया है वैक्सीनेटेड तो तो कोई कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं नहीं है. है, चिंता वाली कोई बात नहीं है. एंड अभी थोड़े टाइम और रुक जाइए, शायद बूस्टर का रिकमेंडेशन भी आने वाला है कि 6 महीने Yes, बाद बूस्टर लगाना पड़ेगा. तो जस्ट डोंट वरी अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वैक्सीनेशन एट दिस टाइम. Everything is okay right now until proven otherwise. absolutely. Yeah. Yes. Anything else that you can recommend, Dr. Anil? Over to you. Um, it, when people, you talked about the modification of rehab protocol. Can you elaborate that? How Yes. to go by doing that? Yes, because say this modification is required in those cases who have some comorbid conditions with them, and most commonly I think there is a network issue. Yeah. Yeah. walking is the safest exercise, and Mm. these are the few things where modification is very much required. Exercises must be done, most commonly occur. I think he's still having network connectivity issue. Okay, I think that covers the topics for today. Um, Thank you so much, Dr. Vanna, Dr. Puneet, and Dr. Anil Jain for joining in. My sincere most apologies to Dr. Navneet Thank Saxena. you. He was not able to join in because of connectivity issue. And if we, in future, if there is any other a possibility of bringing the physicians back on board, then we will definitely bring back another episode of Doc Say Talk. But today we thank you so much, and this is really valuable information. और आज के context में it's really important to
know about these things. Every day is a new day. Things are still evolving. We are learning new things about the virus and about the disease process, how to prevent it, and how to prevent the complications and what to do in the post COVID phase. So, thank you so much to all of you to come. You spared a lot of time for this session, and our thanks on behalf of our audience who is in both India and USA. And फिर मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिए. We just pray that COVID disappears for good. We have absolutely no place of COVID in our lives. It's we want to say goodbye to and COVID. and and reappear. Don't reappear. That is a no reincarnation. No No, reincarnation. no reincarnation. No, this has Thank been you, a Dr. great, Sangeeta. yeah, Dr. Sangeeta, great It job was that a putting. great opportunity, really, to and a great platform which you created, and I hope what we gave the information is informative and useful to the audience, and we have been able to um, solve their answer their questions. And thank you, Dr. Puneet. Your session was a great informative session, because in my OPD patients I have been seeing these kinds of patients with great GI problem, and now I think I'll be able to understand them more clearly. And thank you so much. That's Thank good. Thank you. you, Dr. Anil. I'm happy Thank you, that Dr. Anil, that's about the exercise information. Actually, it is for me also, because after getting 3 times positive COVID infection, I've been exercising very hard lately. So I think I'll go little go uh, slow on that. go Go slow slow on on. me. Yeah, Yes. little Yes. soft on me. Like Uh, this so this is a very so informative thank you. session, and Yeah. Yeah. appreciate all of you's input, and thank you so much. Thank you so Thank much. you. Thank Thank you, you. everyone. Thank you, Sangeeta ji.